Hello students, hello, welcome to Unacademy YouTube class. तो आज student we will actually talk about the NSEJS एक chapter. Okay, we talk about why do we fall ill, है ना. तो देखो इसके बारे में we'll talk about why do we fall ill आज part 1 of the lecture. Okay, right. तो ये YouTube classes में students I try to cover the important topics, right, of the chapters. देखो जो जो NSEJS IJSO में included है, right. तो यहाँ पे देखो this why do we fall ill, it's a very important chapter. तो इसके बारे में थोड़ा सा we'll do some highlights, okay, right. So before we start students, little bit information about the Unacademy Plus program. देखो यहाँ पे Unacademy Plus program, if you take the Plus subscription, okay, right. इसमें देखो all these features are there, है ना, live classes, test series, okay, unlimited practice, structured schedule, okay, ये सारे advantages you can see students, okay. So if you select Plus, देखो all the educators are there, है ना, right. All educators are very good educators in the Unacademy platform, okay. We educators will shape you, we will actually help you so that you can succeed in all your competitive exams, है ना, right. और देखो कैसे यहाँ पे Unacademy gives a competitive edge to all the students, है ना, right. बहुत सारे packages है, but as a educator I think कि 24 months and 12 months का अगर package students you're taking, it gives us the educator the time to actually prepare you properly for all these exams like NTSE, like KVPI, like the Olympiad exams, like the NEET exams in the future, है ना. So you can set up your practice, है ना, यहाँ पे with all the MCQs, all the practice questions, with all the notes. जैसे I provide full notes, okay, I provide full notes for class 9, 10, okay, right, है ना. And I teach in the JEE NEET category, है ना. देखो यहाँ पे this is the IT JEE NEET Foundation NTSE category, है ना, जहाँ पे I teach. Students, don't forget to use my referral code which is Swarnava. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, राइट. along in addition to all these prices, यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अगर चाहिए, always use my code, है ना, Swarnava. My name is Swarnava Roy, तो Swarnava R, okay, Swarnava. यहाँ पे देखो लिंक भी दिखा रहा है. Go to this link and you can purchase this plan. Next option is the iconic package. देखो यहाँ पे this is the iconic package, and iconic के लिए you have to again go to this link यहाँ पे. And students, we have all the features of the Plus class, live classes, test series, unlimited practice, structure schedule. इसके ऊपर we have these extra thing जिसमें देखो बहुत सा good thing is that personal coaching का option है ना, right. So students get the option of personal coaching, and then mains Q&A, study planner, पूरा देखो we will design your course कैसे road towards all these exams and expert guidelines, okay. दो पैकेजेस यहाँ पे 24 months and 12 months का पैकेज, and again use my referral code Swarnava to get the extra 10% discount, okay students, है ना. तो with that information यहाँ पे this is my Telegram channel. Students, take a snapshot of this because this is my Telegram channel, और यहाँ पे my referral code जिससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके. हर स्लाइड के नीचे में if you look at the left hand corner, okay, right, वहाँ पे मेरा referral code दिखेगा. So anytime you forget my referral code, it's always showing on the left side of each slide. आज का टॉपिक as I said कि why do we fall ill. So why do we fall ill का first thing is health and its failure, okay. तो देखते हैं ये health and failure actually what is it. So what is actually health? What is health and its significance? ये बहुत important. What is health and its significance? Okay. देखो health यानी कि health का मतलब is described as a state of complete physical, state of complete mental and social, physical, mental and social well-being, है ना. So health is described as a state of complete physical, mental and social well-being, okay. यानी कि healthy का मतलब I'm not disease free. इसको भी have to understand कि healthy doesn't really mean I'm disease free. Healthy means I am good at every aspect, है ना. मेरा physical कोई problem नहीं है, mental कोई problem नहीं है, और मेरा जो society है ना, society में भी कोई problem नहीं है, okay. So healthy means
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो हेल्दी का ये जो कॉन्सेप्ट ये सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली people in the surrounding, my society, my public health services, है ना. So we'll talk about each of this aspect, okay. Each of this aspect के बारे में we'll talk about, where I'll tell you कि how to be healthy, how many different factors are involved, okay. तो अभी देखो कि thus being healthy means that one feels good physically and has a positive outlook, है ना, and is able to cope with the social and the mental pressure. देखो हमारे यहाँ पे social pressure, mental pressure, ये सारे pressure को देखो लेने का जो क्षमता है, जो हमारे बीच में हमारे अंदर जो पावर है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इफ वी कांट टेक द सोशल एंड द मेंटल प्रेशर, ओके, देन वी आर नॉट हेल्दी, है ना. सो विदाउट डिफिकल्टी, है ना, बहुत ही आसानी से दे कैन टेक द सोशल एंड द मेंटल प्रेशर, ओके, राइट. सो बीइंग हेल्दी इज फार फ्रॉम जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज. सिर्फ डिजीज फ्री होने से हेल्दी हम नहीं होते, राइट, है ना. इट इज फार फ्रॉम बीइंग डिजीज फ्री. सो ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 ऑप्शन फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ साइकिल, राइट. अ पर्सन नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड एंड अ वेरिड डाइट. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर डाइट में प्रॉब्लम है ना, तब प्रॉब्लम. नीड्स टू एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नीड्स टू एक्सरसाइज एंड लिव रेगुलरली इन अ प्रॉपर शेल्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर मकान, प्रॉपर घर, गेट एनफ स्लीप, है ना, राइट. उसके बाद देखो मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग हेल्दी. एंड ये हाइजीन मेंटेन से क्या होता है स्टूडेंट, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, राइट. इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन, ओके. सो क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया देन यू विल बी डिजीज, एंड इफ यू आर डिजीज देन यू आर नॉट हेल्दी. सो अभी क्वेश्चन इज ये डिजीज या इन्फेक्शन क्या है, राइट. तो शॉर्टली व्हाट इज अ डिजीज? अ डिजीज इज बेसिकली regularly usually indicates malfunction of the body. Very very important. So when I say what is a disease मतलब body का malfunction. Malfunction का मतलब there is some problem with the body, है ना, something, some organ problem हुआ है, right, है ना, या बाहर से some kind of microbe has entered the body, so it's a malfunction of the body ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, right. Whatever the normal way the body should function, body is not functioning. So disease is a malfunction in the body. So a doctor is able to diagnose the disease by identifying the symptoms, okay, right. देखो स्टूडेंट्स, एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द सिम्टम, है ना, राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिम्टम्स और साइंस में देखो, इफ वी ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइन, ओके, व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स. सो देखो सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं. लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट सिम्टम्स वी हैव जैसे हेडेक इज अ सिम्टम, है ना, राइट. उसके बाद देखो वी हैव जनरल बॉडी एक, है ना, बॉडी में पेन हो रहा है, राइट. बॉडी एक इज अ सिम्टम. उसके बाद देखो वी हैव स्टोमक अपसेट, है ना, स्टोमक अपसेट इज अ सिम्टम, है ना. उसके बाद देखो फीवर इज अ सिम्टम, है ना, राइट. फीवर इज अ सिम्टम, राइट. सो हेडेक, बॉडी एक, स्टोमक अपसेट, फीवर. उसके बाद देखो सोचो कि देयर इज एक्चुअली राइट स्टोमक पेन, है ना, स्टोमक पेन, है ना. सो ये सारे सिम्टम्स कैन लीड टू अ पर्टिकुलर साइन ऑफ अ डिजीज, है ना. सो डॉक्टर्स दे लुक एट ऑल दिस सिम्टम्स, ओके. उसके बाद देखो दे काइंड ऑफ ट्राई टू फाइंड आउट द sign. So sign का मतलब now after looking at all these symptoms they're indicating a particular disease, है ना. So when doctors they come to a sign, यानी कि डॉक्टर्स आर pretty sure कि what is the problem, है ना. ये सारे इंडिकेशंस, हेडेक हो रहा है, बॉडी हो रहा है, स्टोमक अपसेट, स्टोमक पेन, है ना. उसके बाद देखो डायरिया, है ना, डायरिया. सो मे बी ऑल दिस थिंग्स विल इंडिकेट देखो एक माइक्रोबियल infection, okay, of the right, a foodborne, maybe a foodborne microbial infection, है ना, राइट. उसके बाद देखो डॉक्टर्स को जैसे ही एक इंडिकेशन मिल गया, साइन मिल गया कि ये सारी चीज़ इज इंडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्चुअली माइक्रोब. उसके बाद जस्ट फॉर कंफर्मेशन डॉक्टर्स विल ऑर्डर फॉर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, डॉक्टर्स विल ऑर्डर फॉर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके. एंड ये डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट में दे विल गेट कंफर्मेशन, है. उसको देखो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि what is the nature, what is the kind of disease this patient is suffering from. So basically a disease is regularly indicates the malfunction of the body. A doctor is able to diagnose the disease by identifying the symptoms, है ना, right. And so by identifying the symptoms, and symptoms of a disease may be physical, mental or both, है ना.
So symptoms can be physical, mental, and both. So coming to the disease causing microbes, students, ये बहुत ही important, right? What are the different kind of disease causing? देखो, we are surrounded with so many microbes, है ना, right? So our health is affected not only by unbalanced diet, है ना, right? Not only by unbalanced diet, okay? Health is also affected by the disease causing organisms. ये बहुत ही important, by the disease causing organisms, which may be waterborne, यानी कि पानी से, which can be airborne, यानी कि from air, right, and which can be foodborne. So 3 types of disease हो सकता है, right students? Waterborne disease, है ना, उसके बाद airborne disease, उसके बाद देखो foodborne disease. अभी देखो some diseases are caused by infection through the microorganisms, है ना. Some diseases are like caused by insects, है ना, right? कुछ diseases देखो microorganisms जैसे virus, bacteria, okay? कुछ diseases are caused by insects, कुछ diseases are caused by parasites, है ना, right? Parasitic, जैसे we can talk about the tapeworm, है ना, tapeworm का infection. So infection develops when germs or microbes like viruses or some pathogenic disease like bacteria, fungi, protozoans, helminth, nematodes enter the body. And सब देखो all this kind of things जब body में entry होता है, fungus का, protozoan का, helminth का, nematode का, देखो then disease can develop. So देखो यहाँ पे you can look at these, this is a fungus, है ना, right? है ना, देखो this is a bacteria, right? यहाँ पे देखो कैसे helminth का picture and this is a nematode का picture है, so this is a nematode, okay? So when these kind of things enter our body, तब देखो they can cause disease in our body, okay, right? Right? इसका entry से देखो disease होता है. So therefore to prevent the infection of a disease, कैसे we can prevent the infection? देखो we need to keep our environment clean and hygienic. ये बहुत ही important. We need to keep our environment clean and hygienic, and the personal hygiene and the community hygiene. Personal means खुद का hygiene. I'm washing the hands, I'm washing the legs, and cleaning my mouth every time. बाहर से we are coming inside, okay? From outside when we are coming inside. So personal hygiene and the community hygiene means the place I'm staying, है ना, surrounding में drains are actually all clean, है ना, surrounding में there is actually regularly देखो garbage pickup persons are coming, है ना, तो जहाँ पे I'm staying, the municipality is very active, है ना, right? So community hygiene helps in prevention and spreading of the disease. ये बहुत ही important है. It helps in prevention and it helps in spreading of the disease, okay, right? Next ones we have health and its 3 dimensions. बहुत ही important है, ये बहुत ही important है, health and its 3 dimensions. So यहाँ पे what do we see? What do you mean by health and its 3 dimensions? देखो World Health Organization, it is WHO, right? 1948 में they defined health as a state of physical, mental and social well-being. So a state of complete physical, mental and social well-being, है ना, and not merely an absence of disease or infirmity, है ना, right? Infirmity means body में problem, है ना, infirmity, not firm, okay? So WHO ने healthy ये concept को, okay, they defined health, है ना, defined health as a complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease, okay? In other words, WHO recognizes 3 dimensions. So इसको कहते हैं 3 dimensions of health. देखो this is very important for exam. बहुत बार ऐसे ये question पूछ लिया कि what are the 3 dimensions of health according to WHO? First dimension is physical dimension, जहाँ पे देखो the physical health implies perfect functioning of the body. Perfect functioning of the body, right? Body parts, perfect functioning of the body parts, various organs, organ systems. It can be determined by various tests, okay, right? है ना, various tests में देखो we can find कि heart ठीक से काम कर रहा है, lung ठीक से काम कर रहा है, kidney ठीक से काम कर रहा है, understanding है ना? So that we can do. So physical dimension means body is perfectly healthy, body में कोई problem नहीं है. उसके बाद mental dimension का मतलब mental dimension implies to harmony between the individual and its environment, है ना, harmony between the individual and the environment. अगर देखो जहाँ पे the individual is staying वहाँ पे बहुत problem हो रहा है, वहाँ पे lot of communal problem, religious problems are happening, है ना, so that will not keep a person happy. देखो रात को when we are going to bed, okay, ये डर के we are going to bed कि कुछ हो ना जाए सुबह उठ के, right, है ना, so that is somebody we are on a mental pressure, okay? So mental health implies harmony between individual and its environment, okay, right? उसके बाद social dimension implies that
एवरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी पोजेसेस बेसिक रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लीन प्लेस ऑफ लिविंग, गुड अर्निंग, है ना, सो गुड फूड, हैप्पी फैमिली, उसके बाद देखो कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस विद नेबर्स, ओके, एंड फ्रेंड्स फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड चीयरफुल लाइफ। सो ये सोशल डिमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किसी का जॉब नहीं है, अगर इनकम नहीं है, इट विल पुट लॉट ऑफ एक्चुअली प्रॉब्लम, लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओके। अगर समबडी स्टेइंग इन अ वेरी डर्टी प्लेस, है ना, तब देखो प्रॉब्लम, इवन इफ हाउ मच योर पर्सनल हाइजीन इज गुड, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज इफ यू स्टेइंग समवेयर जहाँ पे बाहर में बहुत गंदगी है, देन अल्टीमेटली यू विल बी विक्टिम ऑफ डेंगू, विक्टिम ऑफ मलेरिया, है ना। सो क्लीन प्लेस लिविंग वेरी इंपॉर्टेंट, गुड अर्निंग इज इंपॉर्टेंट, ओके, हैप्पी फैमिली इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगर फैमिली में प्रॉब्लम है देन यू आर नॉट हेल्दी, है ना। उसके बाद देखो नेबर्स के बीच में देयर शुड बी हैप्पीनेस, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the three dimensions of health: physical dimension, mental dimension, and social dimension based on WHO. Okay. Next, students, we go to the second concept is personal and community issues. So personal and community issues. Okay, both matter for the health, right? So, for example, the health of an organism depends on the personal hygiene, physical environment, social environment, economic condition. So, personal hygiene का मतलब individual's cleanliness, है ना, खुद का cleanliness. It can be achieved by washing of soiled clothes. Soiled का मतलब dirty clothes. It can be achieved by regular cleaning of the teeth. It can be achieved by taking care of the eyes, taking bath every day. उसके बाद देखो wearing clean clothes, timely vaccination against disease. All these things are important for personal hygiene. Physical environment के लिए देखो includes light, temperature, soil, rainfall. Okay, all these are actually the physical environment, है ना. अगर बहुत धूप है, बहुत high temperature देखो, it can be problem. Very low temperature can be a problem, right है ना. अगर rainfall नहीं हो रहा है problem, अगर too much of rainfall, okay, flooding हो रहा है, that can be problem. So all those things also can affect a person's the state of being healthy, है ना, right. उसके बाद social environment is an important factor for our individual health. कैसे कि as humans we live in societies, है ना. देखो हम तो जंगल में नहीं रह सकते, we are living in societies. देखो our social environment is an important factor of an individual health, है ना. कहाँ पे रह रहे, right. Our social environment is important. So we live in villages, towns and cities, okay. In such places even our physical environment is decided by our social environment. कैसे, if public health services or the community health services are inadequate, यानी कि देखो कचरा जो है, right, all these dustbins are not being cleaned, okay, is not being taken by the municipality. Health of the citizens is bound to be affected despite taking best personal hygiene and consuming the balanced diet. अगर हमारे public health services are not good, okay. So सोच लो कि there is no actually there is no hospital, है ना, जहाँ पे we are staying there is no hospital, there is no doctor's clinic, है ना. So again that will be a problem. For instance, if there is a great deal of garbage thrown in the streets and not regularly collected and disposed of, okay, and there are choked means जो drain is not clean, and choked drain, है ना, पानी जम जा रहा है, and with stagnant water lying in the streets and open spaces, okay. So अभी जब अगर stagnant water यानी कि पानी का जमा हो रहा है, then that can lead to dengue, that can lead to all this kind of vector-borne diseases, है ना, right, malaria. So the chances of poor health increases, है ना, अगर the public health services is not good, okay. Therefore public cleanliness is important for individual health, है ना. देखो all these things, social environment is so important, okay. Coming to the different types of public health services, let's see what are the types of public health services. Friends, we have proper removal and disposal of garbage. ये हो गया first public health service, okay, proper removal and disposal of garbage. उसके बाद देखो proper drainage of sewage, है ना. ये जो सीवेज यानी कि ऑल द काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम आवर हाउस, है ना, ये सीवेज हैज टू बी प्रॉपर्ली ड्रेन्ड, ओके. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अनएडल्टरेटेड फूड. अनएडल्टरेटेड मतलब जो फूड में मिलावट नहीं है, ओके, राइट, है ना. सो अनएडल्टरेटेड फूड आइटम्स. वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल मैम मतलब कि वेक्टर कंट्रोल, मच्छर नहीं है, राइट, है ना, रैट्स चूहास नहीं है, राइट, है ना. उसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कोरोना के टाइम में सो इंपॉर्टेंट है ना कि वी ऑल टेक 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन एंड डिजीज कंट्रोल, ओके. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. दिस आर ऑल जॉब ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस, है ना, टू मेक सर्टन के सिटीजन्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले, टू मेक सर्टन के ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन, टू मेक सर्टन के खाना में मिलावट नहीं है, राइट, शुद्ध खाना मिल रहा है, टू मेक सर्टन के प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज, है ना, राइट. जो सीवेज जो कचरा हमारे घर से निकलता है, राइट, है ना, those are properly drained into the city sewage, है ना. उसके बाद प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज, ये इंपॉर्टेंट है.
health education to people regarding disease. People को जानना है कि what is corona, people have to know about it. So इसके लिए education very very important. Alcoholism, drug addiction, safe sex, ये सारे चीज has to be the public has to be made aware by the government. Establishment of community healthcare services, community healthcare services like hospitals होना बहुत जरूरी है, maternity clinic होना जरूरी है, and child care centers should be there. Okay, so these are all the different types of public health services. Okay, which is the responsibility of the government, है ना, right, to provide us. Clear, students? Coming to the next issue is इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी हेल्दी, है ना. इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स प्रॉपर अर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर किसी के पास जॉब नहीं है ना, अगर जॉब नहीं है देन देखो उसका लाइक किड्स आर नॉट, उसका चिल्ड्रन दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, है ना, राइट. तो उसके बाद देखो घर में खाना नहीं है. सो प्रॉपर अर्निंग इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड टू एवरीवन इन द फैमिली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर अर्निंग नहीं है देखो देन द पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड फूड टू द फैमिली. दस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी अवेलेबल इन द सोसाइटीज. अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा सोसाइटी में वी आर स्टेइंग जहाँ पे देयर इज नो जॉब अपॉर्चुनिटी, देन पीपल विल नॉट फाइंड जॉब, पीपल विल नॉट बी एबल टू फीड देयर फैमिली. ओके, सो इन अदर वर्ड्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब दे आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, है ना, राइट. उसके बाद देखो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी. अगर किसी को सोसाइटी इज नॉट गिविंग द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ओके, है ना, किसी का रिलीजन लेके somebody is being harassed, किसी का कम्युनिटी लेके somebody is being harassed, okay, that again doesn't make a person healthy. So it involves participation in one another's joy. देखो किसी का शादी में we are going, you know, so we are being invited, we are inviting us, है ना. तो यहाँ पे कोई भी देखो रिलीजन का कोई भेद नहीं है. there is no difference in religion, no difference in community, no difference in any other discrimination, okay. And sorrows, so we take part in everybody's joys and sorrows, helping others, okay, receiving help at the same time. If we mistreat each other and are afraid of each other, अगर हमें आप आपस में डर है, then we cannot be happy, we cannot be healthy, है ना. So healthy रहने के लिए it is very very important that we respect everybody. So thus both personal and community issues play an important role in determining an individual health, okay. Both personal and community issues play an important role in determining a person's health, right students, है ना. उसके बाद देखो एक एक्टिविटी यहाँ पे इन द NCERT and the NSEJS, okay, to find out how your local authority manages solid waste generated in your neighborhood. So neighborhood में जो solid waste का generation होता है, how does the local authority manages, है ना. ये देखो anybody can do it. You can just kind of go around and see, talk to the municipality office, है ना. वहाँ पे जाके you can say कि how do they function, how do they remove the garbage, okay. So ये एक activity everybody can do. The goals of this activity are these measures adequate, है ना. तो देखना है कि हम जहाँ पे रहते हैं, is the government doing a good job? If not, what improvements would you suggest? Okay, what are the improvements? अगर government ठीक से काम नहीं कर रहा है, what could your family do to reduce? अगर family में problem है, let's say your family is generating a lot of garbage, okay, so what could your family do to reduce the amount of solid waste generated during the day? अगर देखो are we saving energy, all these things. So observation, conclusion and our contribution, okay, right, है ना. So anyway, so the idea is that देखो different students का देखो different kind of observations होगा based on where they are staying. Are there non-biodegradable waste separated and bulk of degradable waste is burned, है ना. अगर biodegradable waste, non-biodegradable, okay, are there separation of that, okay, right. ये सारे चीज़ are also very very important, okay. So this is the kind of activity students can do. You can go around and you can see के जहाँ पे भी you're staying, okay, how is the public health services, okay, right. How are there proper dustbins, okay, are there dustbins which are marked as biodegradable dustbins, non-biodegradable dustbins, है ना. ये सारे चीज़ are there or not, okay. So anyway, एक चीज very important, this is between healthy and a disease free person. What is the difference between these two persons, okay. So the term disease free and healthy do not convey the same thing. A disease free person कौन है? A person is considered disease free if he does not have any discomfort. अगर कोई disease नहीं है, okay, so he doesn't have any discomfort, so it doesn't have any discomfort of the functioning of the body. If a person is not suffering from any disease, it doesn't mean that he is healthy. देखो अगर उसमें कोई disease नहीं हो सकता, but maybe he is in a very bad kind of family life, maybe he has a very bad job नहीं है ना, maybe he is staying in a
society जहाँ पे there is always actually discrimination. So he may have poor health even in the absence of a particular disease. Disease नहीं है but he's not healthy. Okay? For example, if a person is suffering from any kind of mental stress, okay, he can be called disease free, but he's not a healthy person क्योंकि हर वक्त उसके ऊपर mental pressure रहता है. Okay? Healthy person, on the other hand, is one who is able to perform normal under its social. So perform normal under its social and community environment. A healthy person is always happy and always cheerful. Okay. तो यानी कि यहाँ पे healthy और disease free का देखो difference में we have healthy is actually a state of complete physical, mental and social well-being. Disease free is a state of absence of discomfort or derangement. Absence of derangement in any of the parts of the body. Okay. उसके बाद देखो derangement का मतलब which is not organized है ना, जिसमें कोई problem है. Healthy is depends upon the individual as well as the physical and the social environment. Okay, right? It is not only just the individual but also the physical and the social environment factors. And disease free is related to the individual only. Therefore, only I can say I'm disease free, right? So it is only actually related to myself. Okay, so it is related to the individual only. A healthy person will be disease free. Obviously, a healthy person has to be disease free. A disease free person can be healthy or he or she can be unhealthy. Okay, right? So disease free person can be healthy or can be unhealthy. अगर बहुत mental pressure है, अगर बहुत or some other pressure is there, okay, right? Then that person can be unhealthy. Okay, so healthy person is energetic. Healthy person is able to perform as requirement. Okay, बहुत energetic, always positive outlook. Okay, performance of a disease free person depends upon the environment and the personal attitude. Okay, right? Disease free persons में depression हो सकता है, right? ना, maybe that person has a lot of depression, so that person is not a healthy person. Coming to disease and its causes. Okay, what is disease and what are the causes? So what is a disease? देखो अभी I said कि any kind of malfunction of the body parts है ना, we call it so disruption in functioning of a tissue. है ना, disruption means रुकावट है ना, disruption means some kind of damage in the functioning of the tissue, in the functioning of the organ, in the functioning of the organ system will cause discomfort or disease. है ना, disruption in the functioning of the tissues. अगर tissue में कोई disruption हो गया, right? अगर organ में कोई problem हो गया, kidney stops working properly, okay, heart stops working, okay, it will lead to disease or discomfort. So as disruption is internal, the reason of the disease cannot be known immediately. कभी कभी देखो हमको पता नहीं चलता है कि what is the problem, है ना, right? बाहर से we are only seeing the symptoms. Okay, so it's an internal thing. किसी का heart में problem हुआ है, so we don't know exactly it's a heart problem. Doctor has to diagnose and find out. Okay, in the presence of a disease, functioning or appearance of one or more organ system of the body change. So in the presence of a disease, functioning or appearance of one or more organ system of the body changes. अगर कोई microbial infection हो गया, right? है ना, अगर कोई डिजीज हो गया, किसी का थायराइड प्रॉब्लम है ना, किसी का let's say body is not expressing proper let's say the thyroid hormones, है ना, right, the T3 T4, that can lead to problem, that can lead to, let's say, hypothyroidism, can lead to goiter formation, है ना, right, all this problem. So these changes give rise to symptoms and signs of disease. Okay, so definition of a disease is human health gets negatively affected due to the physiological malfunctioning. Due to what? Due to the physiological malfunctioning body ka. So psychological reasons or pathogenic, that means disease causing organism. Okay, so term disease means disease without the ease or without any kind of the disease का मतलब without ease or discomfort. अगर body में कुछ discomfort है, right? अभी देखो, the disease can be defined as an impairment of the normal state of the living. Okay, so impairment of the normal state of the living organism that disturbs or modifies the performance, the vital function. Body का कोई vital function का disruption, कोई vital process जैसे digestion is a vital process, circulation is a vital process, respiration is a vital process. ये सारे vital process में अगर कोई रुकावट आ गया, so we call that a disease. Okay. देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, नाउ ये जो थिंग व्हाट इज मेंट बाय सिम्टम्स एंड साइंस, देखो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट आर सिम्टम्स. ओके, राइट, कोई भी प्रॉब्लम का बहुत सारे सिम्टम्स हो सकता है, राइट, लाइक हेडेक इज अ प्रॉब्लम, राइट. सो हेडेक में ऑकर ड्यू टू अ हेवी workout, right, or due to the blood pressure. So headache is a symptom, है ना. Coughing is a symptom, है ना, right. Loose motion can be a symptom, है ना, right. Wound with a pus can be a symptom. So all these symptoms को doctor देख के they come to a final conclusion that is called it gives a signs. So all these symptoms they give a sign
है ना, सारे के सारे सिम्टम्स को देख के डॉक्टर को एक साइन मिलता है कि ओके ऑल दिस सिम्टम्स यानी कि दिस काइंड ऑफ डिजीज हैज हैपेंड। उसके बाद डॉक्टर रेकमेंड्स अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे डॉक्टर कैन बी श्योर के दिस इज बेसिकली द डिजीज। ओके, सो सिम्टम्स लीड टू अ साइन एंड साइन लीड्स टू एक्चुअली डेफिनेटिव कंफर्मेशन के यही डिजीज हुआ, राइट। अभी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज क्या है, व्हाट इज एन एक्यूट, व्हाट इज क्रॉनिक। देखो एक्यूट डिजीज इज समथिंग व्हिच एक्चुअली acute disease is something that actually happens for a very short time. ऐसे किसी का कोरोना हो गया, so for 7 days 10 days this person suffers, okay, it's an acute disease, है ना। तो उसके बाद देखो the corona will go away, slowly the person will become better. So a acute disease will not leave any long lasting effect in the person, so the manifestation of the disease will be different depending on the number of factors. So some disease lasts for only a very short period of time and these are called the acute disease, okay, right. And we know from this experience that common cold lasts for few days, जितना दिन रहता है उतना दिन देखो बहुत प्रॉब्लम होता है, right. We get fever, है ना, let's say we get a flu, right, so we are very weak, but after some days, after a few days, a week, after a 7 day cycle, okay, देखो the flu leaves the body and then देखो again we get healthy और उसमें कोई there is no permanent damage that happens, okay. But when we look at a chronic disease देखो बहुत दिन से चलता है, so it's an ailment, means a disease can last for a long time, है ना, even as much as a lifetime, पूरा lifetime देखो chronic disease चलता है, okay, this is called chronic disease. And example of like elephantiasis, example is also देखो heart disease, examples are diabetes, examples are asthma, है ना, किसी का देखो asthma रहता है from childhood time, है ना, so whole life they might have asthma, so it's a chronic disease, okay. क्रॉनिक डिजीज देखो उतना सीवियर नहीं होता है जैसे एक्यूट डिजीज, है ना, बट वो बॉडी में रह जाता है, ओके, एंड इट कीप्स गिविंग ट्रबल टू द बॉडी, है ना, थोड़ा ट्रबल, ओके, थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द पर्सन, ओके. सो एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज, ओके. देखो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, यहाँ पे देखो आई एम मेकिंग अ सर्कल, स्टडी ऑफ डिजीज का मतलब पैथोलॉजी. So scientific study of diseases is called pathology. Pathology का मतलब we are studying scientific study of disease. Okay, disease को we are studying is called pathology. The science that deals with the study of cause of disease, causes of disease is called etiology of disease. है ना, science that deals with causes of disease, कैसे एक disease हो रहा है, right, है ना, उसको we call the etiology of the etiology of disease. Okay. फिर देखो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, है ना, जैसे देखो यहाँ पे फिजिकल डिजीज, है ना, फिजिकल कोई प्रॉब्लम जैसे बोन फ्रैक्चर, लेप्रोसी, ओके, राइट, फिजिकल डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कोई वायरस बैक्टीरिया हैज इन्फेक्टेड, जैसे कि टाइफॉइड, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो, ओके, राइट, है ना. डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, मतलब इनएडिक्वेट डाइट के कारण देखो हुआ है, राइट. क्वार्शिकोर इज अ काइंड ऑफ डिजीज जहाँ पे देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैरस्मस का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड डेफिशिएंसी, स्कर्वी का मतलब विटामिन सी डेफिशिएंसी, रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओके. एनीमिया मींस जहाँ पे ब्लड कम है. गोइटर मींस एक्चुअली देयर इज एक्चुअली thyroid gland has a problem, the thyroid hormone problem, okay. Xerophthalmia is an eye disease, okay. Beriberi देखो विटामिन B1 के कारण होता है, राइट, है ना. सो वी हैव डेफिशिएंसी डिजीज, ओके. उसके बाद देखो इनहेरिटेड डिजीज. इनहेरिटेड का मतलब देखो जो हम हमारे पेरेंट्स से भी इनहेरिट, राइट. जैसे वी हैव हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना. ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि देखो यहाँ पे एक क्लॉटिंग फैक्टर का कमी होता है, दैट्स व्हाई द एक बार अगर कोई कट हो गया the bleeding takes a long time to stop, okay, right, है ना. so हेमोफीलिया, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया मींस हमारे जो रेड ब्लड सेल्स दे आर लाइक सिकल शेप, है ना, राइट. ऐसे देखो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, राइट, दे एक्चुअली नॉर्मल ब्लड सेल, सो नॉर्मल आरबीसी इज लाइक दैट, ओके. now it's a concave shape. अभी सिकल आरबीसी देखो ऐसे 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 हो जाता है, राइट, है ना. सो दे काइंड ऑफ सिकल आरबीसी, है ना. और यहाँ पे क्या होता है कि इसके भीतर में जो हीमोग्लोबिन दे आर लाइक पॉलीमराइज्ड, ओके. नॉर्मली हीमोग्लोबिन इज नॉट पॉलीमराइज्ड, ओके. सो सिंस द हीमोग्लोबिन बिकम्स पॉलीमराइज्ड, ओके, राइट, है ना. ऐसे देखो आरबीसी का लंबा सा ऐसे वी हैव इट्स काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लंबा हो जाता है, राइट, बिकॉज द हीमोग्लोबिन ऐसे देखो एक स्टिफ पॉलीमर बन जाता है, राइट. एंड इससे द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स वेरी वेरी लो एंड दैट कैन लीड टू heart disease, that can lead to sickle cell patients, they are actually
प्रॉब्लम्स विद हार्ट अटैक, ऑल दिस थिंग, ओके राइट है ना. तो उसके बाद देखो सो ये दैट इज कॉल्ड सो एंड देन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे पूरा देयर इज द एंटायर ट्रैकिया इज फिल्ड विद एक्चुअली म्यूकस है ना. सो इट इज आल्सो एन इनहेरिटेड डिजीज यानी कि इट इज जेनेटिक डिजीज. ओके देन वी हैव डिजेनरेटिव डिजीज. ओके जहाँ पे देखो आर्थराइटिस है ना, बोन जॉइंट डिजेनरेशन, ओके पोर साइट है ना, हियरिंग डिफेक्ट. ओके मेंटल डिजीज वी हैव डिप्रेशन, पैरानोइया एंड सोशल डिजीज में देखो ड्रग डिपेंडेंस, अल्कोहलिज्म, all this kind of are kind of social disease. Okay, students will stop here. देखो ये it's a 30-40 minutes class, so we'll stop now and keep watching my YouTube lectures है ना. तो we'll continue with why do we fall ill in the next month. अभी दिसंबर में देखो this is the last YouTube class. January में we will continue with more of these kind of NSEJS topics. Okay, ये why do we fall ill का part 2 will continue in January. So keep watching my YouTube lectures. Okay, इससे देखो ये शॉर्ट क्लासेस में देखो कितने सारे नॉलेज यू कैन गेट. एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय टीचिंग, इफ यू थिंक के माय टीचिंग इज गुड, व्हाई डोंट यू टेक द प्लस प्रोग्राम. ओके आई कैन गारंटी यू विल गेट ऑल माय नोट्स है ना. और यहाँ पे कितने सारे क्लासेस, सो मेनी लाइव क्लासेस. ओके राइट है ना, फुल लाइव क्लासेस. एंड अनअकैडमी में कितने सारे फीचर्स हैव कम राइट. स्टूडेंट्स कैन टॉक विद एजुकेटर्स ड्यूरिंग द क्लास है ना. देखो यहाँ पे एक रेज हैंड फीचर है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स कैन टॉक विद डाउट, आस्क अ डाउट फीचर है. तो यू कैन टेक द प्लस और यू कैन टेक द आइकॉनिक पैकेज, जहाँ पे ऑल्सो पर्सनल कोचिंग का ऑप्शन है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस का ऑप्शन है, स्टडी प्लानर का ऑप्शन है. डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड स्वर्नावा, इसको मत भूलो, 10% ऑफ मिल जाएगा. ओके वट एवर द प्राइस यू आर गेटिंग है ना. सो डोंट फॉरगेट दैट. एनीवे स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर. सी यू अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज है ना, राइट. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.